Yo, my name is Dr. Umesh Wadhwani, and you are about to watch my recent workshop on smoking and marijuana addiction. We discussed a lot of topics around addiction, smoking cigarettes, smoking marijuana. The least of which was कि स्मोकिंग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, उनके पैकेट पे भी लिखा होता है एंड ऑल दैट. रादर वी स्पोक अबाउट destigmatizing addiction and discussed a few potential solutions around how we can get off that habit or reduce the frequency or the quantity as such. It's real fun to be a part of that workshop in live setting. I do conduct these workshops very often, almost every week. I share the details of my upcoming workshops on a WhatsApp group. So if you want to join my WhatsApp group, you can find the link in the description. बाकी तो क्या, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, नोटिफिकेशन चालू कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, एंड शेयर दिस अक्रॉस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्प्रेड सम लव. बाकी तो ध्यान रखो अपना, मिलते हैं. Okay, let's go. All right, are we excited for the session? I was really looking forward to this, by the way. It is, I did this session a year back. Offline किया था मैंने मुंबई में, पवई में, and after this I'm doing this same workshop after a year. The complete new set of people. I'm just so excited. How are you? How are you all doing, by the way? Chat box, unmute, you can talk. This is how the structure is going to be like. Great, awesome. So for those who don't know me, my name is Dr. Umesh Wadhwani. I'm a wellness coach and a mental health professional. My aim is to simplify wellness for people who are not from health background. बाकी का सारा चीज तो मैं करता रहता हूँ, न्यूट्रिशन कंसल्टेशन ये वो सब, but my aim as a professional is to give this back to the community by simplifying things for them, right? So इसी purpose की वजह से I do these workshops regularly. I meet with people, I interact with people about different topics, and आज का topic है smoking and marijuana addiction. क्योंकि 2 दिन पहले नो स्मोकिंग डे था, बहुत कम लोगों को पता था, एंड व्हाई वुड वी केयर एनीवे, है ना, नो स्मोकिंग डे पे. But just to give you a brief, this session is going to be really interactive, very informal, casual. You guys can talk in between if you want to. If you have any questions, just you ask. Are we all okay with English? ऐसा कोई है क्या जिसको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, ऐसा कुछ? English works great. English works now? Okay. Actually, I don't know Hindi much, so I think English Okay. will be comfortable for me. Yes. Okay, so Vinod, we will go English, but if some Hindi words get too much for you, feel free to ask. Okay. Sure. Okay. Awesome. All right. So today's session, I don't want this session to be about preaching you कि तुम smoking quit कर दो. This is not the session is about. If you want to smoke the fuck out of your life, do it. ठीक है, मर्जी है तुम्हारी. It's your life. I'm not about to preach you here. 2, we will not talk about के सिगरेट से क्या क्या होता है. We are not going to talk about, right? क्योंकि सिगरेट के बॉक्सेस के पीछे लिखा होता है. If that was not enough, वहां पे उन्होंने गंदे गंदे फोटोज लगा दिए हैं. That was not enough. अक्षय कुमार पाजी, लाइक किसकी गर्लफ्रेंड इससे, लाइक है क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड को पैड्स गिफ्ट करता है और गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है? लाइक व्हाट द हेल वाज दैट एनालॉजी? हीरोगिरी इसमें नहीं है, इसमें है एंड ऑल. ऑलराइट, अक्षय कुमार. देन देयर वाज दैट गाय मुकेश. डू वी ऑल नो मुकेश? सो Yeah. So we all know कि सिगरेट से क्या होता है, क्या नहीं होता है and all. We will still touch upon it because we should have a reason why we are doing what we are doing, right? So we will touch upon that. So first we will talk about कि smoking से होता क्या है हमारी day to day life में. Simple words में we'll talk about. 2, हम smoking क्यों करते हैं? We'll talk about the psychology of smoking. ठीक है? 3, we'll try to differentiate between smoking cigarettes, marijuana, vaping, hookah, and everything, है ना? And last में I'll give you some practical tips as to how you can get off it if you want to.
how you can help your friends and family with this habit. Okay, again, I don't want to use the word quit. I don't know, because no one is quitting. हम नहीं quit कर रहे हैं. Quitting or relationship का जो, so I am a huge admirer of building a good relationship with substance. Okay, quitting is never in my dictionary. So can anyone tell me what is the difference between quitting and having a good relationship? I'll start. Go on. For me, quitting is giving up, and a good relationship is trying on all the time. Okay. So keeping in control rather than getting in that thing's control. Yeah. Like balancing between quitting and maintaining it. Balance. Finding the Having balance. a healthy boundary. Yeah. Love it, Sunny. Thank you so much. That's the word that I was looking for. Having a healthy boundary. Karan, you wanted to say something? No. Okay, fine. I just saw a yellow blurb there. Having a healthy boundary. Now, कोई मुझे बताएगा क्या? Like, is anyone here जो अपनी लाइफ में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फेसेस से जा चुके हैं? Like there was a good amount of time जहाँ पे तुम पंखुरी please. Sorry. हाँ. Yeah. Can you hear me? Yes, I can. तो आप मुझे बताओ ना वो कैसे फेज क्या था? Like कौन से टाइम से कौन से टाइम तुम वेज थे and then? See, I was basically vegetarian all my life till I entered graduation. हाँ. फिर graduation में friends मिले and घर पे तो non-veg allowed नहीं था तो बाहर खाने लग गए. हाँ. And that continued till my post-graduation, and even after that, 2 years after my post-graduation, now I've quit vegetarian or non-vegetarian, like all these things. So you call yourself a vegan now, right? Yeah, I try to be a dairy-free living. Right. So there is a thin line between someone who is a smoker and a non-smoker. अगर तुमने तुम्हारी जिंदगी में कभी भी स्मोक किया है तो वो टैग तो रहने वाला है तुम्हारे साथ, है ना? फिर तुम कितने अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए नहीं स्मोक कर रहे हो तो तुमने क्विट कर दिया. हाउ डू वी डिफाइन दीज थिंग्स? इट्स अ वेरी आई डोंट नो, कोई मुझे हेल्प करेगा क्या इसमें? हाउ डू वी डिफाइन कि मैंने क्विट कर दिया है? लाइक व्हाट इफ मैंने 3 साल से सिगरेट नहीं पिया है, बट मैं मेरे दोस्त की शादी में गया, मेरे सारे पुराने दोस्त दारू वारू पी रहे हैं, सिगरेट पीना है, और मैंने एक सुट्टा मार लिया. Am I a smoker? Did I like what's कहाँ पे हूँ? Where am I in there? I think that's where you have control over the situation, control over the cigarette, maybe. Cool. Love it. All right. ये थोड़ा सा मैंने cliffhanger दिया है कि ये towards the later half of the session we'll be talking about that. Let's come to the intro. Practical, simple भाषा में कोई मुझे बताएगा कि how smoking is affecting our health? Emotionally, mentally, and physically. All the three aspects of life are disturbed. Okay. That is the main effect of smoking. But I know people जो लोग रोज सिगरेट पीते भी हैं 5, 7, 10, 12, but they are not bothered about it. Like उनकी personal life भी chill है, उनको काम से भी कोई problem नहीं है. So I have been smoking around a pack and a half for the past 15 years now. Okay. And I had quit a couple of years back for say about a year. But then things happen in life and then you go back to old habits. And I am currently in the process of trying to quit again. Okay. Because so it does affect you, of course, physically, mentally, and psychologically, as the lady before me said. But for me personally, I have started developing breathing issues. Okay. So I don't know if it's COPD because my pulmonologist cannot actually diagnose it. It hasn't been diagnosed yet. But I would like to get that diagnosed and I would like to quit because I can now feel it affecting me. Because earlier it was more like
it's okay because I couldn't see any visible signs. But now, when something as essential as breathing is getting affected, it does concern you. Breathing is the key word I took from there. But bro, thank you for sharing your journey. Yeah. Nikita, you wanted to say something? Yeah, so I wanted to share that my husband, he suffered a major heart attack in 2013. And he had a smoking history. And every time we go to the doctor or else we meet a new doctor and we tell about this, the first thing they ask is, do you have a smoking history? And if you say yes, so it's like you have spoiled your body. Okay. And his functioning of the heart is less than 30% after that incident. Yeah. So that was major, It does affect your arteries. It does affect your blood. Yes. Emphysema is another thing which happens, which I know. Yeah. But then this is something which we try to educate people that, we have suffered and, you should not. You should not. Fair. So yeah, that's pretty much fair. Does anyone know why smoking affects your breathing? It's a nicotine withdrawal symptom. That is again, see, for someone who is not from health background, it's difficult to understand what is nicotine, uska main effect kya hai, usko withdraw karenge to kya hoga. So again, layman, Ramu Kaka, अगर मुझे चाय की टपरी वाले को समझाना है कि भाई साहब सुट्टा मारोगे तो ये हो सकता है, how are we gonna do that? Does anyone do that? Okay, reduces oxygen. Yes, Smurf, thank you. Reduce tar. Thank you so much. कौन था ये? Carbon monoxide. Carbon monoxide is the second thing, but first is tar. Okay. So cigarette से तुम्हारी body में tar जाता है. Now what tar does is it gets accumulated in your lungs. Now your lungs को तुम कोई practical कोई चीज से तुम्हें compare करना हो तो real life चीज से किससे compare करोगे तुम? Balloons. Yes. So lungs are like balloons, right? उसमें तुम्हारी तुम जो सांस ले रहे हो वो हवा अंदर जाता है. And so वो flexible है. जितना flexible balloon रहेगा उतना ज्यादा air जाएगा. जितना ज्यादा air जाएगा उतना ज्यादा oxygen जाएगा. And जितना ज्यादा oxygen जाएगा उतना अच्छा. एक सवाल तो हम पूछना भूल ही गए. Oxygen क्या करता है? What does oxygen do in our body? जो medical professionals है please चुप रहे. I want to know the other people because we all like हमें पता है ना नाक बंद करेंगे मुंह बंद करेंगे तो हम मर जाएंगे. Why is oxygen necessary? Why is it vital? ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए. वो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए भाई साहब. आप ऐसे ब्रेन को क्यों पार्शियली बता रहे हो? Gives energy. Because it breaks down glucose. Madhvi, yes, it does break down glucose. How about proteins and fats? हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है? Energy. And there is this word we attach with energy. हम वो energy को क्या करते हैं? Activities. Digest, we burn करते हैं. Burn. We burn those calories, right? Whatever we are getting. So for that process to happen, so whatever food that we are eating, it's going to combine with oxygen and then create energy so that we can do our physical activities and our organs can function at the same time. That's why we need oxygen. Oxygen हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन का? बाय द वे इस सारी कहानी का कोई मतलब बनेगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा, what's going to happen after that? What is the transport system of our body? Blood. Yeah. So blood में ऑक्सीजन के लिए ना ऊबर खड़ा रहता है. Do you know that? So your blood is a public transport system, but oxygen is a special customer. तो उसके लिए ऊबर है, and that ऊबर का नाम क्या है पता है?
Oxygen. Oxygen तो भाई साहब Hemoglobin. Oh, sorry, yeah. Hemoglobin. Okay. Hemoglobin. So hemoglobin is the Uber for your oxygen. So तुमने सांस लिया, वो blood में गया, blood में Uber खड़ा है, then it's gonna go in the Uber and across the body, energy release हुआ. Now, when you smoke के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है. अभी प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड binds to hemoglobin and that's why it is not free to bind with oxygen. पर यहाँ पे यस, इंटरेस्टिंग चीज. सब लोग मेरा क्लिफ हैंगर चुरा रहे हैं. नो, इट्स नॉट फेयर. There is a history between oxygen, carbon monoxide and hemoglobin. है ना? हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का एक्स है. And hemoglobin has 300 times more tendency to bind with carbon monoxide than oxygen. So जब हम smoke कर रहे हैं या breathe कर रहे हैं, तो oxygen is there as well. But if carbon monoxide is present in our blood, hemoglobin is going to bind with carbon monoxide. Now oxygen is going to help you with energy creation. Carbon monoxide लुल्ला है, उसको कोई काम नहीं है. It's just gonna go and sit there. What's gonna happen? Your energy level is gonna struggle. Breathing issues. Breathing issue का दूसरा रीजन है टार. टार अंदर जा रहा है, वो जो तुम्हारा इलास्टिसिटी है बलून का, that is being compromised. Less space, less elasticity, less space, less air, less oxygen. Breathing issues. Are we clear on that? Hello. Hello. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Hello. This was great. Okay. Awesome. This was great. Thanks, Umesh. Yeah. All right. So. Yeah, doctor, I have a question. What is tar? Okay, tar is the black चिकना substance that comes. Tobacco को जलने से जो काले कलर का substance होता है ना हमारी बॉडी में जाता है. अच्छा. Okay. Arzu, you had a question. Go for it. Are you there? Okay, हम बाद में ले लेंगे वो सवाल. All right, so this is very basic. This is how smoking is affecting your breathing and your energy levels, right? उसके बाद, is my internet working properly? Yes, Arju, type in there. Can you all hear me properly? No, your voice is cracking and your video is lagging. Okay, just a second. Any better? Hello. Can hear you properly, but the video is not clear. Yeah. Video is not clear. Just a second. Yeah. Any better? Hello. Much better. Much better. Okay. Yes. All right. So और कोई इफेक्ट्स के बारे में तुम्हें पता चले तो मुझे बताना. But let's go forward now. Is it still lagging? It's okay. I mean, we can see you. It's fine. It's not clear, but it's fine. We can see you. Let me change the internet and see. I think it's sorted now. Is it? Yeah. Hello. Yeah, seems better. Now it's fine. Okay, awesome. All right. Let's go forward now. Effects हो गए. There are so many other effects as well. Let's talk about why do we smoke. कोई बताएगा मुझे? Chat box. It feels good. That's what I've heard. It feels really good. It feels good. Yes. A break. It's a stress reliever, I think. Stress reliever. Yeah. Anything else? We will talk about it. Why it feels good, we will Peer talk. pressure. Peer pressure, yes. Yeah. You just talk and your voice is cracking. Peer pressure, for sure. Anything else?
कोई मुझे करण Umesh, how your video is stuck and your voice is cracked. hello is Not it really. We can see you. Yeah. It's all fine with us. Yeah, it's fine. Karan or Smarth, you smoke as well, right? Yeah. How did you start? Promise me you won't upload this to YouTube. I started with my, childhood friends. Okay. So we used to have this big bhaiya, who used to smoke, and he took us along, and we used to copy him and all. Do you associate smoking with being cool? At that time, yes, probably yes, because that was a time when movies were also endorsing that, and Ajay Devgan holding a classic in company, was a style icon. Yes. Yeah. Yes. Karan, how about you? So initially when I started, it was the usual with friends. It was cool to smoke with friends back then. Yeah. And then, but now it is more of a personal choice. Now I smoke more when I'm in my own company than when I'm with people. And plus, I've got people who smoke in my house. So even if I try to quit or rid myself of the habit, it's difficult because you always passive smoke. So that's that. But yes, I guess a lot of people, as you said, smoke to look cool and to fit in, which is, if you ask me, wrong, because you're not actually doing it for yourself, even if it's bad. True. So yes. So when we talk about causes now, if you want to figure out why people smoke or why we smoke, even हमें सारे इसके bad effects पता हैं उसके बाद भी, like we all know कि it causes cancer and we are more likely to get cancer. हमें breathing issues होंगे, हमारे energy levels compromise होंगे, skin, hair, lips पे दिखता है, आंखों पे दिखता है, हाथ like you see the effects everywhere, right? तुम्हारे overall health पे, उसके बाद भी we cannot control it. There are reasons. तो शुरुआत होने का reason number one is it could be genetic. So if your parents उनमें से कोई smoke करता है तो it could be, it is genetic. Okay, but let's come to the environment or the lifestyle कि किसकी वजह से होता है. So people who have started smoking early in the teenage, it is always because of the peer pressure or देखा देखी कि cool लग रहा है तो you start, है ना? That's early. But उसके बाद है ना एक और है जिसका there is a psychological reason, है ना? So when it comes to addiction ना, your brain works on 3-step thingy: trigger, action, and reward. है ना? We all have some or other levels of stress in our lives. We all have, right? अभी मैं वो ओरिजिन पे नहीं जा रहा हूँ कि तुमने सिगरेट स्मोक करना कब शुरू किया था. मैं बोल रहा हूँ कि ये साइकिल रिपीट होता रहता है. कौन सा साइकिल? वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट हियर एंड वी वांट टू फील गुड. कुछ ग्रुप में थे या तो तुमने पहले बचपन में कभी सिगरेट ट्राई किया था, यू गॉट दैट किक, कल तुम्हें अच्छा फील हुआ. नाउ योर ब्रेन नोस कि मैं ये एक्टिविटी रिपीट करूंगा ना तो आई विल फील गुड, है ना? So your trigger was maybe boss के साथ झगड़ा, girlfriend के साथ argument. I don't know what the trigger was. So trigger was something. Now you are not feeling good here. Now your brain remembers that pattern. कि like यार मैं ये करूंगा ना तो मुझे. Now initial जो substance पे जाते हो ना, it's a very personal thing. It's very it depends upon what is available. So let's say Smarth जब सबसे पहले stress हुआ होगा and he was looking out for something to make himself feel better, उसके सामने अगर दारू होती तो ही more likely कि वो alcoholic हो सकता है अगर वो addict हो रहा है तो. So तुम कौन से substance पे जाते हो, it depends कि what is immediately available. तुम्हारे आसपास सिगरेट था तो तुम सिगरेट पे जा सकते हो, तुम दारू था तो दारू, marijuana तो marijuana. But what is happening here is झगड़ा is a trigger, smoking is an action, dopamine release in your brain is a reward. Trigger, action, reward. अब तुम्हारे now there is this condition or there is this term called neuroplasticity. किसी को पता है, सुना है ये term?
meds of course would know. Neuroplasticity is a thing जहाँ पे तुम्हारा body, तुम्हारा brain creates pattern, like it creates a chain of nerves. अगर तुम वो regular वो pattern follow करते हो तो अभी if you have been stressed multiple times and then एक second ना, someone is just, किसका unmute है, just muting. हाँ, if you have been stressed so many times and बीच में तुमने सिगरेट पी किया just to feel better, तुम्हारी बॉडी ने वो उसका न्यूरल कनेक्शन पूरा तैयार कर लिया है, और वो जो पैटर्न बैठ गया है ना ब्रेन में, उसको वो पैटर्न बैठने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. ठीक है, तो वो पैटर्न को हमें ब्रेक करना है इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस हैबिट. बट अभी अगर तुम्हें कभी भी सिगरेट पीने का मन किया बिकॉज ऑफ एनी रीजन एंड यू जस्ट स्मोक्ड वन एंड यू फील गुड, वो चेन बना हुआ है, ट्रिगर एक्शन रिवॉर्ड वो बना हुआ है, राइट? So that is the psychology behind any addiction. It could be cigarette, it could be cocaine, it could be alcohol, it could be marijuana, it could be sex, it could be sugar, it could be chocolates, it could be gambling, it could be porn. This is the psychology. We are talking about smoking. Come back here. Sarah, you want to say something? Yes, sir, I have, heard by someone like psychologist and all that बचपन में जो the stages होते हैं हमारे, उनमें यदि कुछ कमी रहती है तो उसका असर टीनेज में in the form of addictions आता है. Yes. Unfulfilled desire, मतलब gratifications I would say. Yes. So अपने सिगमंड फ्रॉइड थे ना, उनका एक साइकोसेक्सुअल थियरी था. उनके हिसाब से we go through different gratification stages, और so हम अलग अलग एज के हिसाब से हम अलग अलग चीजों से हमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है सेक्सुअली. नाउ सिगमंड फ्रॉइड की बातें सुन के तुम बहुत लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट उनका एक थियरी ये था कि हम जब 1 से 1.5 साल के होते हैं ना, तब हमें ओरल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो इसलिए बहुत लोग थंब चूसते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ दे वांट समथिंग टू सक ऑन, है ना? तो उनका वो ग्रेटिफिकेशन अगर बचपन में पूरा नहीं हुआ है तो दे आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस कंडीशन कॉल्ड ओरल फिक्सेशन. नाउ ओरल फिक्सेशन, दे feel good with smoking marijuana, drinking alcohol, eating more, binge eating again is a sign of oral fixation, है ना? But वो theory पे इतने researches नहीं हुए हैं, so I wouldn't kind of support the theory as much as I would support the trigger action and reward wala thing, na? So trigger action and reward is a psychology, but what if someone doesn't have any stress, which is very unlikely, but तुमने स्ट्रेस की वजह से स्मोक करना नहीं शुरू किया था, तुमने चिल मारने के लिए स्मोक शुरू किया था, लाइक दोस्तों के साथ. उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद आता है तुम्हारा रियल जी स्मोकिंग में जो है निकोटिन. सुना है हमने निकोटिन भाई का नाम? Now nicotine is something. Now nicotine is the active substance in your cigarettes, which is giving you that high. निकोटिन तुम्हारी बॉडी में जाएगा, एड्रेनालिन रिलीज करेगा, एड्रेनालिन विल गिव यू अ गुड किक. इट विल आल्सो अफेक्ट योर डोपामिन रिलीज करेगा, डोपामिन तुम्हें अच्छा फील कराएगा, राइट? निकोटिन के कुछ और भी फीचर्स हैं. निकोटिन इंप्रूव्स योर मेमोरी, इट हेल्प्स यू फोकस, कॉन्सेंट्रेट. ये सारी चीजें निकोटिन से होती हैं. तो तुम्हें ये सारा पैकेज एक साथ मिल रहा है व्हेन यू आर स्मोकिंग. अभी स्ट्रेस है ही नहीं, ऐसे ही चिल मारने के लिए, बट जब तुमने किया तो तुम्हें ये सारी चीजें मिली. तुम्हें काम पे ध्यान नहीं लग रहा है, यू आर गेटिंग बहुत काम है एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू जस्ट लाइट अप अ सिगरेट एंड यू आर एबल टू फोकस मोर, राइट? तो ये निकोटिन हाई है तुम्हारा, यहाँ पे निकोटिन हाई मिल रहा है. अब होगा क्या? तुम निकोटिन से एडिक्ट हो रहे हो. दिस इज साइकोलॉजी प्लस निकोटिन एडिक्शन. निकोटिन हाई का सीन ये है कि वो थोड़ी देर में लो हो जाता है. तुमने स्मोक किया, तुम्हें अच्छा फील हुआ, तुम्हें फोकस हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद शुरू होगा निकोटिन विथड्रॉल सिम्टम्स, जहां पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा फिजिटी फील होगा, एंजाइटी फील होगा. जो भी स्मोकर्स है दे वुड नो कि क्या फील होता है, राइट? स्मर्थ प्लीज बताओ जरा. आई एम सॉरी टू
point you again and again. Nothing really. There are no withdrawal symptoms as It's such. not withdrawal, but you know वो दो cigarettes के बीच का जो time होता है ना, वो You tend to start waiting for the next one. That's it. Yes. You know, when Yeah. the body makes a call, when would you have the next one? Next That's one. it. But let's say तुम्हारा And you suffer 4 for a बजे का reason. तुम्हारा 4 बजे का break होता है cigarette का, but for some reason that got extended to 7. How would it make you feel? Look for a replacement in terms of coffee or something. But you are looking for something, right? In that way, so that is your nicotine calling कि भाई yeah, चिड़चिड़ होता है. That's what I'm trying to say. People get anxious, people get irritated, people get उनको cravings होने लगती हैं. So you satisfy that from some more other thing, right? So that is nicotine. So nicotine मिला, अच्छा लगा, drop हुआ, वापस से. Now that is again another cycle. यहाँ पे stress का कोई scene नहीं है. It could be combined with stress, could not be combined with stress. So these are the two main mechanisms going on तुम्हारी body में, जिसकी वजह से you smoke, है ना? तो how is it different from marijuana? Well, as someone who has tried it for a good amount of time, I would say that my connection with that was creative processes as well as a good enhancement of taste for food and good appetite. Okay. I want to थोड़ा सा poke into the creative वाला part. Did it really help? I suppose, yeah. I mean, if you're sitting down and writing stuff down, and I can say that if I wasn't really focusing on food or anything else at that time, and channeling all my attention towards just creating something or writing something, then yeah, it would come up. My mind would come up with a lot of stuff. Obviously, when I'm feeling, when this thing goes down, the effect of cannabinoids go down, then I would need to go back and filter out the stuff that I don't need there. So I wouldn't just straight away go and post that stuff online. I mean, I would then use that. I'll use a mechanism or a process to filter out stuff, but it just helps bringing out a lot of stuff that is way out there. But at the same time, having quit it now, I don't see a major difference in the way I create. In fact, I feel that I'm creating much better now. Awesome. So we call it as a hallucinogen. Yes. Okay, so how much time do we have, by the way? Like, I was hoping if we can stay here until 10. Are we all okay with that? Or will it be too much? This is great. No problem. I'm happy to be here. Yeah. Because marijuana is something which have been a topic of interest for me for so many years. And I have really fun facts and fun interesting things to share with you all. So, dekhte hain. All right, sahi hai. So, people who want, what we'll do is we will take a selfie at 9:25 before everyone starts leaving, and baki ka आधा घंटा will continue. Okay, there is this question by Arzu. My husband used to smoke, and when I told him to pay, he used to say, "बहुत काम है मेरा." He's taking max 1 in a day or 0 on some days, which he says is not harmful. Yes, Arzu, we will talk about this. And just to give you a short answer, it's not a problem, yeah. See, I wanted to say this at the end of the session, but let me like get it out of the way. You know, when we talk about quitting to smoke or quitting, not smoking marijuana at all, or not eating junk, or not eating sugar, or whatever, we are talking about an ideal world. जहाँ पे तुम हिमालय पे रह रहे हो, तुम टेंट में हो, टेंट में से बाहर निकलते आसपास ग्रीनरी है, कोई दोस्तों के साथ बिचिंग नहीं हो रहा है, तुम्हें काम पे ही नहीं जाना, your life is all set, all you have to do is wake up, meditate and sleep. If that was your life, then
then you think about कि मेरे को cigarette, like वहां पे problem ही, यहाँ पे this is a practical fucking life. तुम सुबह उठते हो तब से तुम्हारे दिमाग की माँ बहन लगी होती है, लाइक तुम सोशल मीडिया खोलते तुम्हारे दिमाग की लगी होती है, राइट? सो आई डोंट एक्सपेक्ट फॉर अ परफेक्ट लाइफ. परफेक्शन इज अ मिथ. डोंट चेस इट. ट्राई टू बी एज गुड एज पॉसिबल. लाइक तुम्हें, यू शुड बी माइंडफुल अबाउट के भाई सिगरेट ज्यादा पीऊंगा तो मेरी बॉडी की लग जाएगी, राइट? मैं मारवानो पीऊंगा तो मेरा मेरा क्या बोलते हैं, रियलिटी से जो टच है दैट कैन गेट डिल्यूटेड थोड़ा सा बिट. You should be aware of the consequences, but you don't have to just completely be scared. Humans ने वो सारी चीजें बनाई हैं. We should be controlling them, not the other way around. है ना? So one smoke, two smokes, one packet a week, it's your choice. You should be in control of it, and we'll talk about it in a sec. Now, marijuana. Now, marijuana, the way it differs from your cigarettes is the active substance. तो जैसे cigarettes में nicotine होता है ना, वैसे marijuana में there is a substance called THC. Don't ask me the full form of it. मेरे को भी याद नहीं और तुमको भी याद नहीं रहेगा. टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉइड करके कुछ तो है, बट मैं बोल भी दिया, मैं 2 सेकंड के बाद पूछेगा नहीं याद होगा तुम लोगों को. So might as well we'll just stay with THC, right? So there are two active there are two active components, right? By the way, marijuana में THC and CBD, right? Now, you must have heard a lot of people. Now, whenever it comes to marijuana, na, people always look for confirmation bias. उनको अपने कानों, वो तो वैसे ही हमारी जनरल लाइफ टेंडेंसी होती है कि हमें जो सुनना है ना, हमें जो अच्छा लगता है वो सुनना हम पसंद करते हैं, राइट? सो पर ये चीजें ना थ्री फोल्ड हो जाती है व्हेन इट कम्स टू मैरिजुआना स्मोकर्स. दे ऑलवेज वांट टू पिक द राइट थिंग्स. तो पीपल हु स्मोक मैरिजुआना ना, यू मस्ट हैव टोल्ड द अदर गाय जिन्होंने कभी भी तुम्हें समझाने की ट्राई की होगी ना मत पी. यू मस्ट हैव, लाइक एक ना एक बार तो तुमने बोला ही होगा यार मैरिजुआना की मेडिसिनल वैल्यूज है ना? मैरिजुआना से किसने कभी क्राइम हुआ है क्या? कभी किसी ने गांजा फूक के किसी को मर्डर किया है क्या? अल्कोहल पी के इतने सारे क्राइम्स होते हैं. ये सारी चीजें, these are the confirmation bias. So we would want to you know कि ये सारी चीजें सही हो हमारे लिए. तो so THC और CBD में से जो THC जो है ना, that is giving you the high. जो हमें हाई फील होता है ना, क्या क्या फील होता है मैरिजुआना स्मोक करने के बाद? You want me to share it? Is there anybody else who has smoked up here? Or I have smoked up here. I will share. Okay. Yeah. Okay. By the way, I have smoked cigarettes as well. So just to put it out. Yeah. I think Smart is putting it feels light. I would say it feels. I would say senses kind of the height of. Yeah, it numbs your senses. For me, it was not numbing. I think it gets better. Everything tastes nice. Music sounds great. I can practically visualize the music. So, yeah, true. Yeah, touch feels great. Whatever comes with that. Everything slows down. Time slows down. Time dilation. Yeah. Munchies, big time. Yeah. Yeah, Vinod just got happy. What did you... just hearing about munchies. Just hearing about. Well, come on, munchies is the best part. Yeah, munchies is the best part. So, and I don't know, has anyone been to Amsterdam? Has anyone been to Amsterdam? Not so far. Amsterdam is the city that is designed for stoners. Like. It's very out and about. You can go and smoke there and stuff, but it is designed in that way. So you can go to the cafes, you smoke up. As soon as you come out of the cafe, you see displays full of pizzas and burgers and brownies and chocolates, and like big ones. You know. So munchies, life slows down. You may feel creative and stuff. What else? As anyone gets anxiety, have you heard of BT, bad trip? Yeah, I've had like a couple of those, not too many, just very few. Yeah. So bad trip. I have had few of those. Anxiety, panic attacks. Yeah.
Yeah. When you confront your parents about it, or you go near them, right? You feel kind of like getting anxiety whether they'll find it or Oh yes. some things like that. Whether the other person will judge us about it. Okay. So someone is saying my friend smokes to induce potty. Yeah, I know. It's a very common thing. Brain feels light. I'm just reading the chats. Okay, we are discussing drugs in different form. Rahul had to leave. Wow. Pankhuri is like never felt this bad of a FOMO before. Pankhuri, you have to light up a joint or sometime, someday. And this part we are not going to upload on YouTube. Don't worry. Okay. Sarah is like manias. Yes, you do get mania. You do feel. Smarth भाई साहब अलग ही trip पे हैं. I have never felt. Okay, सही है. All right, so THC, CBD. So THC gets you high and gives you all these symptoms, and CBD has the medicinal effects. So people who think कि marijuana smoke करना अच्छा है क्योंकि उसकी medicinal values हैं, जो तुम smoke कर रहे हो उसमें वो नहीं है. CBD जो है जो medicinal values के लिए है, that is helpful for treating depression, Alzheimer's, pain killer के तौर पे use होता है ये सारी चीजों में. But वो treat करने के लिए वो चीजें तुम्हें होना जरूरी भी है ना अंजलि you're like मैं अल्जाइमर्स तू अल्जाइमर्स नहीं है तेरे को why would you be smoking a pot तू है ना नहीं बस एक बार ट्राई किया था बस I'm just kidding okay so you got my point right so CBD THC now आज मैंने एक रील पोस्ट किया था मेरे इंस्टा पे एंड उसका सेकंड हाफ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा द फर्स्ट हाफ इज इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टडी कि हमारी बॉडी में ना हमारे जितने भी हार्मोन्स है ना दे वर्क ऑन अ लॉक एंड की फिनोमेना मतलब हार्मोन इज अ की एंड उसका रिसेप्टर इज अ लॉक तो जैसे कि डोपामिन इज अ हार्मोन राइट तो डोपामिन को अच्छा फील कराता है अभी डोपामिन को अच्छा फील कराने के लिए उसको उसके रिसेप्टर से जुड़ना पड़ेगा इट हैज टू कनेक्ट टू द रिसेप्टर टू मेक यू फील गुड राइट तो डोपामिन है हमारी बॉडी में खुद से रिलीज होता है और उसके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में है टू मेक अस फील गुड बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी स्टमक इंटेस्टाइन ब्रेन लंग्स हार्ट हर जगह पे THC रिसेप्टर्स है और THC हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है कहना क्या चाहते हो यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ so that is why it picks up almost the entire body picks up the effect what is being supplied yeah and उससे पहले the question is does our body wanted us to kind of consume marijuana because अगर वो prepared है it's like a proper fit proper fit THC receptor का तो just that but उसके बाद एक और स्टडी आया which kind of relaxed people otherwise है ना stoners तो खुश हो गए थे ऊपर वाले ने बोला है हमारी बॉडी ऐसे बनाई है ना so तो पीना ही पड़ेगा and people got really excited but then there was another study now that study is और interesting कि वो THC के लिए exclusive receptor नहीं है वो हमें जो blissful feeling आती है ना आनंद की एकदम sorry can you all hear me yeah so हमें जो blissful feeling आती है ना वो blissful feeling के लिए हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल के लिए वो रिसेप्टर्स बने हुए हैं और वो केमिकल अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ब्लिस लेवल्स होते हैं ना तो वो जब भी तुम ब्लिसफुल फील करते हो तब वो केमिकल रिलीज होता है और वो THC रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होता है एंड यू फील गुड है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो जो केमिकल है ना उसका नाम now it has nothing to do with our session but it's such a good trivia that I want to share it with you okay वो जो केमिकल है जो हमें ब्लिस फील कराता है उस ब्लिस को संस्कृत में हम क्या बुलाते हैं पता है आनंद 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 राइट
That chemical's name is anandamide. Not kidding. Wow. Not kidding. And I'll be releasing it in another reel tomorrow. क्योंकि अभी मेरे को ये कीड़ा जगह है random curiosity का. So I'm been just looking out for different information about our health and stuff. But when I came across this fact when I was researching about marijuana and stuff, it just so THC, CBD, THC receptors जब भी एक्टिवेट होते हैं जब हम marijuana लेते हैं, तो अभी ये जो आनंदमाइट है और THC इन दोनों में फर्क ये है, कॉमन चीज ये है कि दोनों THC रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, राइट? बट डिफरेंस ये है कि आनंदमाइट इज अ रेगुलेटेड वर्जन ऑफ इट. तो आनंदमाइट विल एनालाइज कि भाई तुम्हें कितने ब्लिस की जरूरत है, उतने हिसाब से वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा. Whereas THC has no regulation, जो हम स्मोक में से लेते हैं, तो वो तुम्हारे बॉडी में जाएगा एंड अपने अपने तुम्हारे बॉडी के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से वो इट विल जस्ट स्प्रेड अक्रॉस. जो जो तुम्हारे ब्रेन का सेंटर एक्टिवेट करेगा वैसे वैसे तुम फील करोगे. तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में देयर इज दिस सेंटर कॉल्ड एमिगडाला व्हिच डील्स विद योर इमोशन, स्पेशली द इमोशन ऑफ फियर. तो अगर तुम्हारा एमिगडाला का THC रिसेप्टर स्पार्क हो रहा है तो यू आर गेटिंग अ बैड ट्रिप. अगर तुम्हारा हंगर वाला जो एरिया है वहां के THC रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहा है तो यू आर गोइंग ऑन अ बैड मंचीज. बट इट इज नॉट रेगुलेटेड, सो यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. Are you all with me? Can you hear me? Hello, hello, hello. Yeah, you lagged a little bit, but I think now it's clear. Okay, awesome. All right. So, last 1 minute. हाँ, तो did we understand the difference between Anandamide and THC? Okay, fair, cool. All right, chalo. So this was a basic difference between marijuana and nicotine. Cigarettes में से मिलता है. Addiction का pattern दोनों में same है, trigger, action, reward. Now we will take a quick selfie and then say goodbye to people who want to leave, and then we will talk about the solution. So if you are someone who is looking for solution, we'll finish the solutions in like 15-20 minutes. So hang in there. जो लोग हैं कैमरा चालू कर सकते हैं, प्लीज आ जाइए. हाय परी. साक्षी हूँ. आपका नाम परी लिखा हुआ है. हाँ, क्योंकि मैंने अभी नाम चेंज कर लिया है. Yes, Munni is here as well. Hi, Mamta. Okay, all right. Are we all set? Are we all set? Are we all set? 1 and 2 and 3. एक और लगेगा. All right, 1 and 2 and 3. Yes. Awesome. All right. मजा आ रहा है आज के सेशन में. एक आध मिनट का ब्रेक लेते हैं. ब्रीदर. Can I say something, Umesh? Yes, please, Pankaj. Yes. So, cigarette smoking is in a way related to spinal pains and headaches also. So, I wanted to know, when you kind of get a patient like that, how do you convey about the mechanisms that they should leave or maybe slow down or something, or work on their smoking, maybe whatever. That would be the general suggestions anyway, like which will be applicable for anyone and everyone, not specific. Yeah, but also like see, for the patients, I mean, for people, it's like every doctor will tell this, right? So it kind of goes into the hawa. You know, lifestyle changes. वैसी हवा में चल जाता है बहुत बार. So yeah. This particular thing, if this is gonna help, how do you convey that? How do you put it forward? Or what help do you suggest to them to take if they are genuinely ready to work on it? See, I can't think of anything specific with the spinal pain and injuries wala section. I have a set
theme, like 10 pointers है मेरे पास, which I would be giving to everyone, because उसमें सबसे पहला pointer यही आता है कि you have to find your why, कि why do you want to, है ना? तो वहां पे you will be able to tell them a connection between how the smoking is worsening or worsening their condition or delaying their healing. So if you can do that, that can help them find their why. Yeah, definitely. Yeah. So it does delay recovery. Yeah, that is for sure. So agar unko, and that would be the first step for everyone for that matter. So if you are planning to कि तुम्हें सिगरेट तुम्हें परेशान कर रही है for some or other reason, like कोई भी वे में, तो you have to find your why do you want to leave it, why you should, है ना? पर उससे पहले, अच्छा, who all smoke? This is the first time I'm asking here. I should be asking this in the first place. कोई कौन कौन स्मोक करता है यहाँ पे अभी? Okay, fair. So the first step, and do you want to reduce or leave smoking? No. Do you enjoy it? You enjoy the kick, right? Yeah, it's a good kick. It's a good kick. So I would particularly be curious its impact on diabetics, especially with respect to that liver ka enzyme wala thing. And can it slow down anyone's weight loss journey? Both. These are Yes, the it two does things affect. It does affect your diabetes condition for sure, because nicotine has an effect on insulin and blood sugar levels. So every time you smoke, your blood sugar levels are spiking a bit. So if you're diabetic, you should at least have a less frequency of that. And it has effects on your blood. It makes your blood thick. It has effect on your arteries. It creates that plaque on your arteries, which is going to affect your blood pressure levels and cholesterol levels and everything is there. So वो तो है ही है. दूसरा, and how about the weight loss? ये सारी चीजें connected ही है ना. Right. दूसरा, it does, yes, go on. In short, when you smoking, that your metabolism rate goes very high. So it goes so high you eat. So those are not absorbed in your body. So then because of that, your appetite goes low. Roshni, I couldn't hear the last part. So I said like those calories, whatever you're eating, so it's not getting that food is not getting properly absorbed in your body. And that also is a cause of constipation seen in such people. And also because of metabolism rate is so high, that is the reason. And उसके वजह से आपको भूख भी नहीं लगती है, because वो खाना properly digest ही नहीं हो रहा है. So that is leading to weight loss. Any other questions, or should we move to? Acha, I'll quickly talk about shisha before it gets too late. If you think shisha or e-cigarettes is better compared to cigarettes, I would say might as well smoke a normal cigarette. Like that's not a replacement. Shisha, you might end up smoking more nicotine. More smoke can go in your body, because तुम एक सिगरेट 4-5 मिनट में खत्म कर रहे हो, शीशा एक 1.5 घंटा चलता है. उसमें भी टबैको है, उसमें भी निकोटिन है. हर्बल शीशा किसी को मजा आता नहीं है ना? So if you are trying to fool yourself with that, don't. It's a simple thing. Shisha sometimes can be worse compared to cigarettes because of the mere duration and the amount of smoke going in. ठीक है? Let's talk solutions. No doubt. So, first and foremost, if you want to quit, you have to ask yourself, do you really want to? है ना? Do you really want to? कोई तुम्हें जज नहीं कर सकता इस चीज पे. If you are smoking, it's your life. You know, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं ना कि don't judge anyone from the way they look. You don't know what that person is going through. Yeah, have you all saw that post? This is the time where we implement it in our real life.
We don't. You smoke. That's your life. What I'm trying to tell you here is कि just normalize it. क्योंकि people find it hard to quit because it has been stigmatized. हमने उसको नीचे नजर पे देखा हुआ है. Like लड़के तो अभी भी privileged हैं. लड़कियां बेचारी they cannot. Like लड़के तो ऐसे ही बाहर निकल के ऐसे सुट्टा मार सकते हैं. लड़की अगर बाहर सिगरेट पी रही है तो बात खत्म है. उसका पूरा कैरेक्टर एनालिसिस हो जाएगा वहां पे, है ना. So we have stigmatized it. So what I'm trying to say is कि don't. इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. If you smoke, that's okay. Life is good. तुम्हें पता है कि वो क्या करता है तुम्हारी बॉडी के साथ. नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा. स्मोकिंग करने से कैंसर होगा वो किसी ने लिख के नहीं दिया है. चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, है ना. तो कैंसर तो उन लोगों को भी हुआ जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया. तो फर्स्ट जस्ट नॉर्मलाइज. इट्स ओके. लाइफ इज गुड even if you smoke. 2, you identify what it is doing to your body. So you are into your 40s, तुम्हारी हेल्थ वैसे बिगड़ रही है और स्मोकिंग ऐड कर रहा है वहां पे. तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्विट, गो कोल्ड टर्की फ्रॉम द नेक्स्ट डे. आई एम सेइंग थोड़ा सा रिड्यूस कर दो ना. डोंट टेल योर ब्रेन कि तुम्हें ये अलाउड ही नहीं है. Your brain doesn't work that way. हम कितने भी बड़े हो जाए ना, हमारे ब्रेन में that बच्चा stays alive. बच्चे को जो बोलते हैं ना कि ये नहीं करना है, बच्चा will be like मैं पहले करेगा. And that बच्चा is still alive in our brain. So you tell कि भाई कल से तू नहीं करेगा, your बच्चा will be like मैं 4 और पिएगा. So again, normalize it. You allow your brain कि it's allowed, it's permitted. तुम्हें जब पीना होगा तो पी सकता है. जितना हम क्लोजर एक प्रिजन बनाने की ट्राई करेंगे ना, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा रिड्यूस करना. सो सेकंड इज दैट. ठीक है. थर्ड, मेक अ माइंड. एंड हियर इज वेरी सिली एनालॉजी. ओके, गुजरात से मुंबई जाना है ना. गुजरात से मुंबई जाना है तो I have to travel towards Mumbai, right? मैं चलूं, साइकिल पे जाऊं, बाइक पे जाऊं, गाड़ी पे जाऊं, बस में जाऊं, ट्रक में जाऊं, फ्लाइट में जाऊं, इट्स मेरी मर्जी. बट आई हैव टू ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ मुंबई. दैट इज, मैं बड़ौदा से शुरू किया, सूरत जाऊंगा, वापी जाऊंगा, एंड देन मुंबई आएगा, राइट. बट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम बड़ौदा एंड स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिल्ली, am I going to reach Mumbai ever? I'm not. It's a silly as fuck. I know. But what I'm trying to say is you have to make a mind कि यार मेरे को कल से है ना reduce करना है. So what's gonna happen with that is your brain will start making new neural connections. कि स्मर्थ भाई साहब ने कल से decide किया है कि वो reduce करने की try करेगा. Then your brain will do its own job. हर जगह पे वो opportunities देखेगा. हर जगह पे वो अपॉर्चुनिटीज देखेगा कि ये जर्नी शुरू किया है ना, तो जर्नी को फास्ट कैसे करना है. यस, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड. इफ यू आर वेटिंग फॉर अ मोटिवेशन, नहीं आने वाला मोटिवेशन. यू एक्ट एंड देन मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा. तो सो कल से लेट्स डिसाइड कि कल से आज मैं अगर 12 सिगरेट पी रहा हूँ दिन की, तो कल से है ना मैं 10 पिएगा. अचीवेबल ना. 2 सिगरेट ही कम करना है ना मेरे को. इट्स अचीवेबल, राइट. That's your third. कोई नोट्स बना रहा है क्या ये नीचे चैट पे? So one is destigmatize it. Numbers तुम याद रखना, या तो ये वीडियो मिल ही जाएगा तुम लोगों को. ठीक है. Alright. Fourth, you have to prepare before deciding. मतलब ये जो ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम है ना, ट्रिगर इज योर स्ट्रेस. अंबानी की लाइफ में भी स्ट्रेस है, तो हम तो गरीब बेचारे, मिडिल क्लास, अपर, हायर, व्हाटएवर क्लास वी आर, तो स्ट्रेस तो रहेगा हमारी लाइफ में. सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रिगर. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू समथिंग अबाउट द एक्शन, है ना. सो एक्शन में तुम सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट की जगह पे कुछ और करो.
which is your action, जो तुम्हें reward देगा. Now, do you know what other things give you the reward of dopamine? Coffee. Coffee, exercise, jog, dance. And dopamine जरूरी नहीं है. Dopamine जरूरी नहीं है. There are other rewarding hormones as well. Oxytocin. Oxytocin सुना है तुमने? Now, oxytocin is a love and affection का hormone. So if you just speak or just spend time with your loved one, oxytocin is going to release and it will make you feel better. यार जाके किसी को जप्पी दे दो घर पे, कोई इंसान नहीं मिल रहा ना, गार्डन में जाके ट्री को जप्पी दे दो. I'm not kidding. These are practical things you can do and it will make you feel better. But 12 बार सिगरेट पीते हो और 12 बार तुम्हें मन कर रहा है सिगरेट पीने का, तो I'm not saying कि 12 times you just don't smoke and go out for a walk or jog or hug someone or something like that. I'm not saying that. I'm saying धीरे धीरे 12 में से 2 बार ही तो कर ही सकते हो ना. एक बार वॉक पे चले गए, एक बार किसी से बात कर लिया, है ना. So find a different action. It could be exercise, dance, music, eating something, watching something. उसके बाद आएगा nicotine replacement therapies, NRTs. सुना है क्या? Yeah, I've heard of Nicotex and patches. Yes, Sarah. Spending time with pets, yeah. So NRTs are like chewing gums, patches, inhalers, जिसमें nicotine होता है. Now, one may say that कि भाई nicotine अगर हम smoke से ले रहे हैं और nicotine वहां से ले रहे हैं, nicotine तो जा ही रहा है. Nicotine is an addictive substance. So how is it going to help? It is like easing out. Let's say तुम अगर दिन में 10 cigarettes पी रहे हो ना, तो you are getting at least 25 to 30 mg of nicotine every day in your body. तो तुम 25 to 30 में से 0 पे आ जाओगे ना, तो your body will go just haywire. Like तुम इतना depressed feel करोगे ना, you'll be like what the fuck, life is just जंड हो गई पूरा. तो I'm saying कि वो धीरे धीरे तुम जा सकते हो ना. So nicotine patch will give you 4-5 mg of nicotine, which is just sustainable. Your body को पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा nicotine आ रहा है, पर इतना भी नहीं आ रहा है कि तुम addict हो जाओ उससे. So it's like a midway. You're not smoking, तो टार नहीं जा रहा है. सिगरेट के अंदर जो 7000 दूसरे केमिकल है, हाँ बाय द वे 7000 केमिकल्स होते हैं. If you don't know, one cigarette has 7,000 different chemicals which can potentially cause you cancer. So वो स्मोक के साथ अंदर जा रहे हैं. तो सिगरेट नहीं पियो, उसके साथ में च्युइंग गम खा रहे हो, तो यू आर जस्ट गेटिंग लो डोज ऑफ निकोटिन. तो तुम्हारे ब्रेन को तुम ट्रिक कर रहे हो एंड यू आर ईजिंग आउट. ठीक है, आर वी कूल विद दैट? इसके बाद जो है ना, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करती है. Announce it on your social media with friends and family. If your friends and family know that you smoke, announce कि कल से मैं सिगरेट स्मोक क्विट करने का प्लान कर रहा हूं और 2 महीने में मेरा एम है 12 से 0 सिगरेट पे आने का. जस्ट टेल. उसके बाद क्या होगा, जो पीयर प्रेशर ने तुम्हें सिगरेट पीना शुरू करवाया था ना, ये पीयर प्रेशर सिगरेट छुड़वाएगा. ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम लगी है मेरे क्लाइंट्स को, बहुत. सी एग्जैक्टली सारा देव, सी यहाँ पे लोग क्या कहेंगे को मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूं. अदरवाइज आई ऑलवेज क्रिटिसाइज दैट होल प्रैक्टिस. लोग क्या कहेंगे को तुम तुम्हारे फेवर में यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू जस्ट अनाउंस इट. आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट ट्रिक्स. ये कहीं पे भी मेडिकल बुक्स में नहीं है. दिस इज माई प्रैक्टिस. मैं 8 साल से एडिक्शन सेंटर में काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है. मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि दिस इज व्हाट इट इज. ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें काम, यू फाइंड योर ओन मोजो. शुरुआत होनी चाहिए विद एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे इट इज. दैट इज द फर्स्ट. बाकी की जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये अपनी अपनी तुम खुद की बना सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें खुद को गिल्ट ट्रिप में से बाहर निकालना पड़ेगा. तुम कोई बुरी चीज नहीं कर रहे हो.
You are an adult, you are responsible of your actions, you know what's happening, है ना? So वो पहला है. उसके बाद की अभी भी दूसरी भी चीज है मेरे पास. किसी को कुछ सवाल है यहाँ पे? Thank you, man. Thank you, Sunny. Now, जैसे मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहा था ना, so our brain has so many different neuroplasticity patterns, and you would know when I start saying things, okay? दिन में 24 घंटे में बहुत सारी चीजें है ना ऑटोमेटेड होती है हमारी लाइफ में. जैसे कि तुम उठे, सीधा बाथरूम में गए, मुंह धोए, टॉयलेट सीट पे बैठे, इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, फिर ब्रश किया, बाहर निकले, चाय कर, यू नो दिस इज ऑटोमेटेड. यहाँ पे तुम्हें कोई ज्यादा थॉट डालने की जरूरत नहीं. तुम्हारा ब्रेन इज ऑलरेडी, तुम्हें पता है. या तो तुम नॉर्मल दुनिया में जहाँ पे तुम काम पे या कॉलेज जाते थे, तो तुम्हारा कॉलेज का रूट एंड बस कौन सा पकड़ना है, कितने नंबर की बस पकड़नी है, कितने टाइम की पकड़नी है, कितने बजे घर से निकलना है, everything is automated. Your brain is set, right? That is what we call neuroplasticity. Your brain knows कि कितने बजे exactly मुझे उठना है, कितने बजे, ये सब अपने आप हो रहा है, right? सिगरेट का भी सेम सीन है. तुम्हारे ब्रेन को पता है कि पैकेट कहाँ पे पड़ा है, मेरे को कहाँ हाथ डालना है, कहाँ से लाइटर निकलेगा. द होल पैटर्न इज सेट कि मैं 11 बजे काम कर रहा हूँ, 1 बजे मेरा लंच होगा, मैं ऐसे बाहर जाऊंगा, सिगरेट निकालूंगा, पीऊंगा यहाँ से. सो इट्स, ये पूरा पैटर्न हमारे दिमाग पे सेट है. ये पैटर्न को ब्रेक करना काफी इजी है. ये जो पूरा डोमिनो इफेक्ट है ना, उसमें से एक पीस निकाल देना है. लेट्स से तुम्हें अल्कोहल के साथ सिगरेट पीने की आदत है कि मैं बियर या वाइन के साथ मेरे को सिगरेट चाहिए साथ. उस दिन सिगरेट बाय मत कर. जस्ट हैव योर अल्कोहल. यू आर रिमूविंग वन पीस. या तो लाइटर मत लाओ. डू समथिंग व्हिच इज टेकिंग वन. जस्ट मेक थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल फॉर यू, थोड़ा सा. योर ब्रेन इज सच अ लेजी एस. नहीं होगा उससे. पहली बार में शायद है ना तुम कुछ करा के कहीं से कुछ जुगाड़ करने की ट्राई करोगे, दूसरी बार में करोगे, तीसरी बार में you'll be like I can't be bothered, मेरा प्लास्टिसिटी सेट था. दोपहर को तुम्हें 1 बजे या 2 बजे सिगरेट पीने की आदत है, ब्रेक दैट पैटर्न. एक बार एक पीस निकालना है उसमें से. सो ब्रेकिंग अ पैटर्न विल हेल्प यू ब्रेक द न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड इफ यू कैन मैनेज टू डू इट फॉर 3 weeks, you can at least it's a journey, by the way. It's a journey. 6-7 महीना, 1 आध साल भी लग सकता है 12 से 0 पे आते आते. Only if you want to. बाकी तो सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के तो अपने हैं ही. That's completely fine. Now, एक दो और चीजें हैं. इसमें से एक चीज जो मैंने बहुत बार तुम लोगों के साथ बात किया हुआ है इसके बारे में, that's called meditation. Now one would question कि यहाँ पे meditation का क्या काम है. यहाँ पे meditation का क्या काम है? Meditation का मीनिंग याद है किसी को? It's just mindfully breathing and focusing inwards. Self-awareness. Activating the senses. Being in presence. Yeah, सारे आंसर सही है. Being in present, focusing inward, self-aware, being in present, using all your senses basically, so that you are aware of the present, right? So when controlling thoughts, happy thoughts. No, Smart, we can't go there. No. So happy thoughts is not in our control. Thoughts are not in our control. Not in our control, yeah. ना, so happy तो आएगा ही नहीं ना. और वैसे भी like मुझे है ना, ये happiness is a hoax. I don't believe it. Like it's not an ultimate. तुम्हें happiness वो बोलते हैं ना रीच करना है, बस हर चीज is not about happiness. कभी कभार sad होना भी मजा होता है, right? हाँ. So why happy? Why? It's overrated. So coming back to meditation का मेरा खुद का छोटा सा theory है, which is the amalgamation of so many different theories.
meditation is nothing but being in present, using all your senses or as many of your senses as possible, non-judgmentally. So non-judgmental part we already spoke about. You don't have to judge yourself if you smoke. But what I'm trying to do is, किसी को actual smoking का process mindfully याद है क्या कि how actually the smoke tastes or how it feels when you're smoking? यहाँ पे taste buds के आसपास. अगर नहीं ना तो next time when you smoke, please do it meditation के साथ. Do it mindfully. Try to notice the taste. Try to notice the taste of cigarette or the smoke going in and see यहाँ पे throat के पीछे या जीभ के आसपास कैसा feel होता है. Okay? It's a disgusting feeling. But we are not mindful when smoking. That's the reason we have never realized it. So if you start practicing meditation and mindfulness, you are more aware about your senses. And when you smoke, at that point as well, you are more aware about how it feels. So whenever next time you feel like smoking, that taste will come in your mind and it will put you off. Thoda sa. Again, you are taking one domino piece away from it. What I'm trying to do here is I'm trying to take away the positive things associated with smoking. I want you to be with a few things ताकि तुम वो few things के लिए few times ही smoke करो और eventually वो few things भी तुम्हें अच्छी ना लगे तो you completely जाने दो उसको. Because bliss तो फिर आनंदामाइट से भी मिलता है, आनंदामाइट तो दूसरी चीजों से भी मिलता है ना. So meditation is one thing. And last couple छोटी छोटी चीजें, अगर तुम्हारा हाउस होल्ड में स्मोकिंग करते थे तुम घर पे ही तो और क्विट करने का प्लान कर रहे हो तो क्लीन योर हाउस प्रॉपरली सो दैट सिगरेट का स्मेल ना हो. बिकॉज मेमोरी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एडिक्शन के साथ. इफ यू स्मेल तुम्हें वापस से अर्ज होगा, राइट? सो डू दैट. हाउ डू वी गेट दिस आनंद? सी आनंदमाइट इज इट्स योर बॉडी इज नेचुरल मैकेनिज्म. सो जब भी, और हमारे लिए अलग अलग होता है ना, ब्लिस हम अलग अलग तरीके से फील करते हैं तो तुम्हारी बॉडी रिलीज. सो व्हेनेवर यू फील हैप्पीनेस, योर बॉडी इज रिलीजिंग आनंदमाइट टू मेक यू फील. we will do a session on marijuana for sure, completely separate one. उसके बाद तुम छोटी छोटी चीजें, रिवॉर्ड हो गया यार, तुम्हारे पैसे कितने बच रहे हैं, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या कि तुम महीने में कितना खर्चा करते हो सिगरेट पे? वही चीज से तुम प्रोटीन ला सकते हो, तुम्हारा बॉडी शॉडी बन सकता है. सोच लो 43 की एज में 6 पैक एब्स बन रहे हैं स्मर्थ, क्या? और the last and the final one before we open up for a open discussion, guys, अगर क्विट करना है तो बार बार ट्राई करना पड़ेगा, एक अटेम्प्ट से नहीं होगा और शायद क्विट होगा भी नहीं. शायद you want to freaking smoke till the end of your life. शायद तुम मर रहे होगे तभी भी तुम तुम्हारे बेटे या पोते को बोलोगे कि मेरे लिए एक सुट्टा लेके. I don't know, it's your life. I'm saying कि just start talking with your body and see if your smoking is affecting you. Start using these tips that I gave you to minimize it. Because it is affecting you, right? वो it's like तुम्हारी मशीन है और मशीन में तुम कुछ डाल रहे हो और वो मशीन सही से फंक्शन नहीं कर रही. वही है, मशीन कोई और चीज की वजह से भी बंद हो सकती है और सिगरेट की वजह से भी बंद हो सकती है. तो जरूरी नहीं है सिगरेट बंद करना. But if it is affecting you, you can always reduce the damage, है ना? So yeah, that was it from my side. Let's we have 8-9 minutes more. Let's discuss if you want to discuss something. I asked for the detox. Yes. Thank you, man. Thank you, sir. रोशनी, डिटॉक्स तो आप हमें बताओगे ना, मैं तो ऐसे ही, you are the clinical nutritionist. I thought I would add some more. नहीं, आप मुझे बताओ. See, first of all, मैं मेरा belief बता देता हूँ. I don't believe in individual detox diets because I feel our body is more than capable of detoxing itself.
If you Yes, eat but the general diet, smoking is deteriorating it, right? yeah, It is it is. affecting your liver, your kidneys, your heart, everything, your blood vessels. So as soon as you stop smoking, which is not damaging it anymore, and start eating a balanced, generally good diet, it is start going to like उसका work अपने आप शुरू हो जाएगा. So हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए, सी, ई, उनका तुम प्रमाण ज्यादा कर दो तुम्हारी डाइट में, तुम्हारा डिटॉक्स अच्छे से हो रहा है. तो अदरवाइज इट्स जस्ट नॉर्मल balanced diet is required for your body functioning to come back and stop the thing which is actually damaging it. So that is what my theory is around detox. But if you have any specific food items or anything, people would love to know. Yes, Roshni. One I have seen is there is a tea which you make, matcha tea. Yes. Japanese. It has 10 times more powerful antioxidants, like more than even a green tea. Yes. So that I have studied, like even we had made a lot of research also on that. So that is really helpful for actually the patients who withdraw it and they have quit. So they give it to them 4 to 5 times a day. So that whatever effects have been done. And second is most powerful, even I give it to my patients, is lemon zest tea. Lemon zest tea, yes. But again, you see, vitamin C. Yes, same. Yeah. Antioxidants. So we are focusing on antioxidants. But see, these two has been powerful things according to my practice level. But one is matcha tea and lemon zest. That is 100% there, Roshni. But उसमें होता क्या है? So the reason why I don't believe in one item suggestions is because people take this as a magic pill कि मैं matcha green tea पी लूंगी और पूरा दिन burger, pizza, chocolates, brownies खाऊंगी तो all good है. No, healthy diet is must. It's the first priority. It's the first priority. Yeah, this is the cherry on cake. Yes, that's it. That's it. तो इसके लिए है ना, कोई मैनुअल कार ड्राइव करता है क्या? Sunny, if you start your car, yeah, and then you put it to the first gear, right? Yeah. First gear. Would you start your car on the fifth one? No. You wouldn't. It's like so. Green tea, zest tea, matcha green tea, lemon juice, honey, ये सारी चीजें हैं ना, मेरे लिए starting a car in fifth gear है. We have to start a car in a first gear, which is your balanced diet, get your good proteins, good fats, move your body, stop the things which are damaging your body, and then ये अब तुम्हारी गाड़ी मस्त में चल रही है, then go full speed with matcha green tea, zest tea, and everything on top. But yeah, thank you, Roshni. But these are there. Whew. Awesome. I hope you guys had fun. Do share your feedback with your friends and family and let people know. I'll be conducting these workshops regularly. I do that anyway. So if you are not part of my WhatsApp group, be one. I hope you all have my details, right? Yeah. On LinkedIn, I'll connect with you on LinkedIn, Doctor. Oh, yes. So Instagram is here. WhatsApp is here. No, WhatsApp number गलत आया है. Yes, इधर सही वाला. Cool. चलो तो फिर. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. One question I had. Yes. Someone wrote that smoking helps you in your GI system to function properly and helps you poop. Would you call it right or wrong? No, it doesn't help. So see, कोई चीज help करता है नहीं करता है, depend, वो matter करता है कि it's consistent amongst everyone or not. Some people get constipated with smoking. Some people get lose motion or have potty with after smoking cigarette. So जो लोगों को cigarette पीने के बाद potty आता है, it's a indisposition. It's a थोड़ा सा modified version of habit. तो अगर उसमें तुम पैटर्न ब्रेक कर दोगे ना, सो लेट्स से कोई बोलता है ना, सर मेरे को तो तंबाकू या बीड़ी लेने के बाद ही पोटी आता है, 3 दिन तक मैं बीड़ी नहीं देगा, सिगरेट नहीं देगा, तो पोटी तो आने वाला है ना 3 दिन में, कहाँ अंदर गुम थोड़ी होगा. सो वो पैटर्न ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा. दैट्स एन इंडिस्पोजिशन.
It does have constipation effect on our body. That's there, nicotine का. But वो जो poop के लिए जरूरी है, it's just हमारी lifestyle में हमने एक आदत बनाई हुई है. It's called indisposition. थोड़ा सा habit से different होता है वो. So yeah, that's that. Okay. Sir, I Thank have a you. doubt. Yes, Vinod. Sir, I don't know whether it's a myth or a fact, but some of my friend told me that after consuming marijuana, he felt like he could study better, a lot better. But in my case, I couldn't feel that. Is that true, or I don't know whether it's a myth? Vinod, I was saying that people try to find confirmation bias, but it could be true for that person because we THC or marijuana का जो effect है on our bodies, it's not constant, and it is because of so many different reasons. And one of the reasons is that it's not legalized. Marijuana is not legalized. उसकी वजह से उसके जो growers है ना, it's not regulated. उसमें THC का quantity कितना होना चाहिए, it's not regulated at all. So maybe the one you are smoking has different amount of THC than your friends, and THC ka effect on his brain is completely different to what your brain effect is. So there is no constant, you know. So we can't jump on conclusion then. There so many variables. Yes. But जो लोग creative feel करते हैं ना, like people who say कि creativity feel होता है, it's not creativity. It's more about unpredictable neural connections. So your brain is picking memories from so random places in your head कि sometimes तुम्हें लगता है कि ये तो shit मेरे दिमाग में अभी मैंने सोचा ही नहीं था, कहाँ से आ गया. But it is happening because of your hippocampus. Your hippocampus deals with your memory and the storage, right? It's your hard drive. तो वहां पे भी THC receptors है. तो अगर तुम्हारा THC वहां पे पहुंच चुका है and hippocampus थोड़ा हिल गया है, तो you will have all the unpredictable thoughts and you will feel कि shit man, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, है ना? So it could be, but if you can work in your favor, make it work in your favor. Why not? Why not? But you cannot use that as an excuse to smoke up every night. And it happens in musicians and artists. Sunny, what do you do, if I may ask? Yeah, I am a life coach, Okay. but I also, I mean, I just to kind of put it out there, I've been a life coach only for the last few months. Okay. I'm a corporate trainer. Awesome. And yeah, recreationally I used to smoke up, but then I think I gave it up starting this year in January. So yeah. Okay. Fair. But I have like when I was in the UK, I shared this apartment with two of my friends for around 9 years. They both were musicians and singers and writers, and like this is their most common excuse. I want to write a song and I need to smoke up, and so they used to smoke up every night, and they have only 2 singles out so far. So yeah, 3,365 days, only 2 singles. So that explains a lot. Yeah. So yeah, that's that. But they are amazing artists, so do check them out too. Bhai hai mere, so I can't. I can't. But guys, If I have another doubt also. Yes, Vinod, I have to shoot off. But go on. Sir, whether marijuana consumption is whether it leads to memory loss and all, and whether I couldn't be able to recollect a lot of things after studying, after consuming marijuana and studying also. So it actually leads to memory loss? It does. It is one of the very, very common effects of it. It does. But as I said, Vinod, what we'll do is Holi is coming. Let's do a separate session on marijuana. Yeah. Okay. Complete. Like we will do a proper session. We'll talk about charas, hashish, ganja, everything. Okay? We'll talk about it. Maza aega. Okay? Actually, recently also I also quit it recently abruptly. For past I think 2 weeks back I quit it, and I'm just smoking cigarettes per day. Per day, one only I'm consuming. It's okay.
So it is going on for me like that. Dude. So I'm trying to stop right now. Even smoking itself. That's cool. Try if you can. That's amazing. Give your body something else. Actually, like you said, it has become a habit for me because I used to smoke up regularly on a daily basis with my friends. And it sort of made me a habit, and it made me realize that I'm losing a lot of things in life. So I started thinking like maybe this is a point where I should quit right now and take care of other things in my life. Yeah. Make a list of pros and cons. See how it is affecting you and see what you can gain once you stop it. Our brain works on that thing, now. We see pros and cons, we see benefits over negatives, right? So if you have a list in front of us, that can help. This is again a confirmation or affirmation. Like I again make my clients do this. List बना के मुझे दिखाओ. So yeah, guys, I have to shoot off. मिलते हैं. Thank you so much. I'll see you in my next workshop, which will be next weekend. Thank you so much. Good night, everyone. Good night, Avni. Good night, Sunny. Bhavna. Bye, bye, Bishram. Bye, Vinod. Bye, Ankita. Bye, Shraddha. Bye, Divya. Bye, Meenakshi. Bye, Najib. Take care. Good night.